So let's start today. Thermodynamics. Understood? Thermodynamics. Therm means what? What is therm? Tell me. Heat. From the first class, I have told you therm means heat. Dynamics, many times you have Motion. come across this. Dynamics means in motion. In motion. So heat in motion. So thermodynamics is such a chapter where we'll discuss about heat in motion. Heat in motion means actually what we'll discuss here. We'll discuss how heat is converted into work and how work is converted into heat, vice versa. This chapter will discuss that one. So where heat is converted into work in day-to-day life? Can anybody tell me? किए मते कहि परिबे कोठी हीट टा वर्क रे कन्वर्ट होछ आमे जहा विषय पढ़िबा एटके जानिबा दरकार ना दुनिया रे कोठी होची कोन होची खाली पढ़िले त हमको सेमति घुसले ओले लागिबो को सब दिन के ना के हीट टू वर्क रे कन्वर्ट करछ हैं सर फूड बनेबारे कोन बनेबारे सर कुक कला बेले हाँ कुक कला बेले गुड एग्जांपल कुक कला बेले तुम हीट को वर्क रे कन्वर्ट करूछ अच्छा तमे इतले तुम बाइक रे बसुछ से तोले पेट्रोल आ डीजल ता भीतर अछि ना तुम जो स्टार्ट करूछ तुम स्टार्ट करबा जहा गैस चूल्हा को लाइटर रे ऑन करबा से जानछ तो तुम स्टार्ट कले गोटे छोटा स्पार्क टे होची स्पार्क है कि तुम गाड़ी भीतर पेट्रोल एयर से तो मिसी की से बर्न होगा स्टार्ट होची सितरे हीट एनर्जी डेवलप माने बाहरुची और से हीट वर्क रे कन्वर्ट हेले तुम vehicle wheel गडुची heat is converted into work then every vehicle heat is converted into work understood सेहित पई हीट टा हेटी इन्वॉल्व बोली तमे केमते जानिबो तम गाड़ी टा टिके समय चलला पर गाटा इंजन कोन होची हाथ लगे परिबो इंजन रे possible ना सर heat is converted into work okay so write down this is the branch of physics deals about the study of this is the branch of physics deals about the study of heat converted into work and vice versa deals about the study of heat converted into work and vice versa thermodynamics Sir, can you repeat? the branch of physics deals about the study of heat converted into work and vice versa so terminology let's come to the terminology what terms will use gote chapter bhitere enter kariya purburu etire bahut de nuwa nuwa term tha ame सब term bishe gote idea collect कर दबा तापर हम chapter भीतर को enter करिबा तो first term let's start thermodynamic system thermodynamic system first term कौन thermodynamic system का को thermodynamic system कहबा it is a device by the help of which heat is converted into work it is a device by the help of which heat is converted into work ei device रे heat टा work रे convert हुए thermodynamic system तो day to day life रे तो अलगा बट आमे हमर फिजिक्स रे पढिबा पई ए बळे thermodynamic system करिबा फिजिक्स रे पढिबा पई day to day life रे thermodynamic system means that is different okay this is called as a piston आपको piston जी जाओ आमे जो डायग्राम टाको बार बार करबा चैप्टर सारा ये जो वॉल गुडा मैं एमती कहीं की करिछि because this is adiabatic wall adiabatic means insulated एपटे हीट जिबा आसबा कर परिबन एटी कहीं सिंगल लेयर करछि because this is diathermic wall
Diathermic means conducting wall. Conducting wall. Understood? Yes, sir. Okay. Diathermic means conducting wall. Clear? Through this we can supply heat, and this is the piston, and inside it will take working substance. Inside it will take working substance. Right? Can you tell me one example in day-to-day life of this thermodynamic system? Can anybody tell me? Sir, pressure cooker. Good. Pressure cooker is the one best example of this system. Okay. तो कौन हो एथिरे केमती थर्मोडायनामिक सिस्टम हला देखो तुम निजे कंपेयर करो आकू तो भीतर वर्किंग सब्सटेंस नि आइछि मते को तम पय वर्किंग सब्सटेंस के भात देखछि रे Sir, पानी. water is the working substance. Okay, petrol diesel engine the working substance के Sir, petrol. petrol mixed with air, that is the working substance. ताको working substance कहंती हला. This is the piston. भात डिक्चर piston के प्रेशर कुकर तो piston सब बुझी परछु ऊपर जोटा थाए छोटटा. Yes, sir. भात डिक्चर piston के Sir, तारा ये cover. तो Sir, अरे cover. कवर डेक्चर कवर जाको तुम ढांकुनी बोली कहउछ तळु हीट देले से ढांकुनटा ऊपर जंप करिवो प्रॉपर अरेंजमेंट जदी थांता से ढांकुनटा ऊपर को उठी उठी का जानता जेतो अरेंजमेंट नाही से जंप करि करि तळु बळी पडुछ हैला. तो दिस इज द adiabatic wall, this is the diathermic wall. ए बेले थर्मोडायनामिक सिस्टम हमें फिजिक्स सारा करिवा बट प्रैक्टिकल लाइफ रे थर्मोडायनामिक सिस्टम कहले से टिके अलगा प्रकार रो हैला. त समस्तंगर सिस्टम बिषय आइडिया मिली गला. देन राइट ऑन बीट बी वर्किंग सब्सटेंस. What is working substance? काको working substance बोली कहंती? What is called a working substance? ए भीतर जो निया हला ता डेफिनेशन हमें केमते लिखिबा देखो इट इज ए कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. It is a collection of a large number of particles interacting with each other. It is a collection of large number of particles interacting with each other. Okay. Collection of a large number of particles interacting with each other. Understood? For example, write down engine working substance के petrol mixed with air. बट आमे फिजिक्स रे सबले कहा को वर्किंग सब्सटेंस कर यूज करिवा जी की केबे भी पॉसिबल न हो के कहि परिबो का फिजिक्स रे वर्किंग सब्सटेंस करिके हमें जे केबे भी पॉसिबल न हो. टेल मी. वर्किंग सब्सटेंस जोटा नबा हमें भीतर जो आगुर ऑलरेडी तुमको जोटा कहउथिले बे भात डेक्ची भीतर राई हम जो वाटर नबा पेट्रोल इंजन दा पेट्रोल हीट इंजन भीतर जहा को निया हबो ताको वर्किंग सब्सटेंस बोली कहन. जा द्वारा हम वाटर करिवा बुझले ता हेल्प रे ही हबो. ओके. Yes. That is called as working substance. But आमे को working substance physics सारा यूज करिवा आइडियल गैस लिखा एग्जांपल आइडियल गैस जे की केबे भी पॉसिबल न हो.
तो फिजिक्स रे पढ़ीबाटा अलगा डे टू डे लाइफ सिचुएशन अलगा सेट पे तुम टिके लिंक करूथा फिजिक्स रे हम सब आइडियल केस पढुचे बट डे टू डे लाइफ इट्स डिफरेंट then write down thermodynamic parameters then write down thermodynamic parameters or variables will be कहते कौन thermodynamic variables जेतले हमें आइडियल गैस नबा बा जहां भी नबा तार किछि प्रेशर थिबो किछि वॉल्यूम थिबो किछि टेंपरेचर थिबो एमती बहुत किछि सब थिबो सेडो सब thermodynamic parameters बा variables will count means the physical quantities सर सब गोटे फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट पे यूज करा जाए let down the physical quantities associated with a thermodynamic system the physical quantities associated with a thermodynamic system which may undergo a change which may undergo a change हबो कि न हबो हमें जानि नै हमें सेत में लिखि दिले which may undergo a change हेई पारे न हेई पारे are called thermodynamic variables the physical quantities associated with a thermodynamic system which may undergo a change are called thermodynamic variables okay for example कौन सब सेमती variables माने अछंती pvt सुहाग p for who can tell me pressure, v for volume, t for temperature, s for pressure, S for in chemistry you have read Sir, entropy. S for entropy. U for internal energy, internal energy. H for energy, enthalpy enthalpy, G for Gibbs free law. gives free energy. Okay. So all these are the thermodynamic variables, right? All these are P, V, T, swag, thermodynamic variables. All these are right. But generally, our focus will be only this PVT and U. These things are required in chemistry. Elaborately, we will discuss in chemistry, and I am not going to them. But pressure, volume, temperature, everybody are acquainted with this. So all, but internal energy you are not that much acquainted. I am internal energy discussion kariba. But ta purburu, a thermodynamic variables are classified into two types. These are classified into two types. कौन दीटा types one classify चंती? These are classified into two types. Beat A write down extensive. Beat A write down extensive. What is extensive? What is extensive? Variables. Mass dependent. Extensive variables means these depend on the size of the system. The variables depend on the size of the system. The variables depend on the size of the system. That is extensive variable. Depend on the size of the system. को मैंने सब size of system ऊपर depend करते mass, volume, mass depend करिबा, volume depend करिबा, internal energy. Okay. मैंने सब size of the system ऊपर depend करिबे. Internal energy, entropy भी हबा, enthalpy भी हबा, gives free energy हबा, सब जगह समस्त depend करिबे. Entropy, enthalpy, gives free energy, all these are the extensive variables. The depend on the size of the system means केते quantity रे जिंस अछि ता ऊपर depend करिबा. Okay, जते अधिक थिबो तले mass अधिक हबो, जते अधिक थिबो volume भी अधिक हबो.
तो अधिक हो इंटरनल एनर्जी अधिक हो बट कौन इंटरनल एनर्जी आई विल टेल यू नाउ देन अनदर टाइप राइट डाउन व्हाट इज द अदर टाइप intensive I told you na two types intensive write down the variables independent of what size of independent of the size of the system the variables independent of the size of the system okay which are independent of size of system sir pt size of the system upare कोवन depend करंतनी temperature pressure okay Density. specific heat capacity c means constant temperature pressure density specific heat capacity okay mainly हमरो ए मान को भितर देखिबार थिला mainly ए तीनटा हमर इंपोर्टेंट देखिबा पई ओके जति कि प्रेशर टेंपरेचर जाउचंती से माने इंटेंसिव रे इंडिपेंडेंट और एक्सटेंसिव रे जाउचंती के वॉल्यूम जाउचे और इंटरनली जाउचे done the classification thermodynamic variables yes sir sir. heat तो directly proportional to mass तो temperature टा किछे mass तो heat given is proportional to mass okay Yes. हमें कहते heat दबा से mass ऊपर डिपेंड करछ टेंपरेचर सब गोटे जते हमर सब एनवायरनमेंट टेंपरेचर ता एटी बुझिला yes sir एनवायरनमेंट टेंपरेचर नाउ दिस इज द एनवायरनमेंट टेंपरेचर बुझिला तो yes sir टेंपरेचर गोटे जिंसर केते अमाउंट अछि सेरा के डिपेंड करिवो yes sir ओके मैं दीटा अलग अलग बॉडी ताकर मास किंतु अलग अलग थिबो किंतु टेंपरेचर कोइ थिबो sir same सेम हेतिबो हला मास अलग अलग थिबो बट टेंपरेचर सेम हेतिबो yes देखो sir नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी इंटरनल इज द कोन व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी राइट डाउन लेट्स हेडिंग इंटरनल एनर्जी नेक्स्ट टर्म राइट डाउन इंटरनल एनर्जी द सम टोटल इंटरनल एनर्जी माने सब गोटे कोन सिस्टम consists of a many number of molecules से molecules माने कर टोटल एनर्जी रो सम को इंटरनल एनर्जी बोली कहै जे सिंबल टा कैपिटल यू दबा तले मॉलिक्यूल मान कर कोन एनर्जी थिबो काइनेटिक एनर्जी थिबो और पोटेंशियल एनर्जी थिबो अच्छा काइनेटिक एनर्जी विभिन्न टाइप्स से थिबो लिनियर मोशन जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन जदी करूछनी ता जो काइनेटिक एनर्जी जदी वाइब्रेशन करूछनी ता जो काइनेटिक एनर्जी बट हम गोटे काम करली लिखि दबा हम एते लिखिबे डिफरेंट डिफरेंट बुक लेखंती ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हम सीधा लिखिदा ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी राइट डाउन the sum of all types of kinetic energy and potential energy the sum of all types of kinetic energy and potential energy of all molecules सब जगह molecule जितने थिबे ता भितरे of all molecules of a system is called its internal energy the sum of all types of kinetic energy and potential energy of all molecules in system is called as internal energy it only depends on temperature जो कहा ऊपर डिपेंड करेनी केवल टेंपरेचर पर डिपेंड कर जब टेंपरेचर कांस्टेंट एनर्जी कांस्टेंट टेंपरेचर चेंज तो एनर्जी चेंज it only depends on temperature से खाली टेंपरेचर ऊपर ही डिपेंड करिबा okay it only depends on temperature internal energy got it Yes, sir. then we'll discuss thermodynamic work done what is thermodynamic work done next term thermodynamic work done okay thermodynamic work done कोन गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम आमे कर दबा समस्ते एट गोटे पिस्टन अछि एपटे को मैं इंसुलेटेड कर दउची वॉल को
मते को ए पिस्टन रे मु जदी तळु हीट देबी क्यू अमाउंट रो हीट देली सपोज आ भीतर जो वर्किंग सब्सटेंस थिबो ता वॉल्यूम बढ़िबो ता वॉल्यूम बढ़िले पिस्टन टी कोन हबो वर्तमान उपरକୁ राइज करियो ऊपर को राइज करिवो पिस्टन रा वर्तमान तार प्लेस चेंज कर देला पिस्टन रा एठी पळैला एठी पळैले सो देयर इज नाउ डिस्प्लेसमेंट जदी पिस्टन टा डेल एक्स अमाउंट रो डिस्प्लेसमेंट कला del x amount of displacement कला माने this where there is displacement there is work done कल्चर work done हला राइट तो work done हला कितने अमाउंट रो work done हला we can find out समस्त फिगर ड्रा कर दियो फिगर ड्रा कर दे समस्ते डन लेट्स फाइंड द वर्क डन समस्त फॉर्मूला मने अछि वर्क डन फॉर्मूला टेल मी नॉर्मली वर्क डन फॉर्मूला को जहा पढिथिलो तुम पूर्व चैप्टर गुडा करे Sir, F into del x. Sir, F F into? into del x. f into del x खाली f into del x कहतिली ना कोन कहतिली f into del x कहला बेले गोटे कंडीशन कहतिली when force is constant but when force is variable कोन वर्क डन Integration of फॉर्मूला x. इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ f dx कहतिले हैला तो f into del x फर्स्ट हम करबा देखिबा हैला फोर्स कांस्टेंट सपोज बट एठी हम फोर्स जगह में रिप्लेस करबा द प्रेशर इनटू एरिया पा you know force is equal to pa pressure into area so area into del x is what वॉल्यूम change in volume so this is the thermodynamic work done but again the same thing I'll repeat here it is only applicable when pressure is constant remember but जदि pressure constant न होई कि pressure variable हेतबो ताले कोन अब सही केस रे Integration of p. इंटीग्रेशन when pressure variable then W is equal to P dV integration remember maximum time we will use this formula variable formula P dV integration So p को Okay. केमना डिविजन इंटीग्रेट करबो P dV okay that's सेटा हम इंटीग्रेशन कला बेले मु तुमको कहबी गुड क्वेश्चन से कहला P तो सर अलग वेरिएबल V तो अलग वेरिएबल हम केमती इंटीग्रेशन करबा सेटा हम इंटीग्रेशन करबा दैट द ट्रिक ऑफ इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन समय मु तुमको कहबी यस राइट बट ए वार्डन साइन कन्वेंशन फॉर्मूला समस्त मन रह गला दीटा फॉर्मूला कहली बहुत इंपोर्टेंट तो साइन कन्वेंशन में कौन रहइबो देखो साइन कन्वेंशन रेड साइन कन्वेंशन ऑफ वार्डन एक्सपेंशन मत को what is del v del v is पॉजिटिव then warden is positive तान ऊपर को एक्सपेंड हैला ओके तो ई केस रे कहंती वर्क इज डन ऑन द सिस्टम राइट डाउन दिस इज सेड टू बी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम work is done on the system bit b if compression what happens to lv Negative. नेगेटिव work done is negative means piston comes down यस so in this case बाय द सिस्टम work is said to be done by the system सिस्टम work is said to be done by the system okay so these are the sign done got it Yes, sir. still two terms are there so write down
equation of state. Then write down equation of state. What is equation of state? Next term, the relation between the variables. Equation of state. Relation between the variables is called the equation of state. Right. The relation between the variables is called as the equation of state. Relation between variables means, tell me one relation. For example, ideal gas equation. PV is equal to nRT. What equation of state happen na? This is the relation between variables. Yes. Na? PV is equal to A. So Boyle's law. Boyle's law. V by T is equal to K. Which law? Charles law. Charles law. All these are one equation of states. Okay, you got a term wala. Next is like indicator diagram. The last term is indicator diagram. What is indicator diagram? Indicator diagram means, before some days I told you some diagrams, some graph like this called as a phase diagram. Phase Pressure and temp pressure of temperature. versus Temperature. pressure versus temperature with graph that is called a phase diagram. But it pressure of volume with graph kariba and that is called indicator diagram. Write down indicator diagram. The graphical representation of the variation between pressure and volume. The graphical representation of the variation between pressure and volume okay is called as indicator diagram. The graphical representation of the variation between pressure and volume. Pressure volume भितर हम ग्राफ करिबा. ग्राफ तार जहा आसबो सेतरा हमर के जास नै तको हम इंडिकेटर डायग्राम करिबा. वेरिएशन देखि कि तार ग्राफ आसबो. ग्राफ एमती आसीगला. सपोज हम कहू तुमको जोटी कि ग्राफ रो स्टार्टिंग पॉइंट होची v1 वॉल्यूम, एंडिंग पॉइंट होची v2 वॉल्यूम, आउ तार एटा होची प्रेशर p. सपोज गोटे ग्राफ तुम करो. एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ गोटे को शेप रो अछि मते टिके कहबो कि एरिया टा को शेप. Rectangle. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल एरिया फॉर्मूला कोन? Cylinder. means pressure into del V. Pressure into del V का फॉर्मूला? Pressure into del V का फॉर्मूला? Work done. Work done. Got it. So that means your conclusion is area under indicator diagram provides the value of concluding line. Diagram provides the value of thermodynamic work done. This is the concluding line. मुझे तुमको खाली ग्राफ दे दी इंडिकेटर डायग्राम तो मैं वर्क डन बाहर कर दो कि ना एरिया अंडर द ग्राफ. Area under indicator diagram provides the value of thermodynamic work done. So this is all about the different terms used in thermodynamics. Then we will go to the different processes again in the next class. Thank you.